Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmiya Green School, Jhareshwar Bharuch. My name is Swati Sharma and it's class 9th maths. And our chapter is triangle. Chapter number 7, that is triangle. Okay, student, you all are know what is triangle. Triangle having three sides. Closed figure is called a triangle. If the sides are 3 and that are closed figure, that is called a triangle. Okay, now triangle having total 6 elements, that is 3 sides and 3 angles. Okay, and also triangle having 3 vertices also. Okay, understand? And in this chapter we have learned about triangle. Okay, in a triangle we learn some properties, some criteria of congruence of a triangle. What do you mean by congruence of a triangle? If we talk about a congruence, then in our daily life we see many objects around us which have same shape and size of object that have exactly same shape and size are congruent to each other. Okay, and in case of triangle, if two triangles are congruent if and only if they have exactly same shape and same size. Okay, so we can say that the two triangles have congruent to each other. Okay, congruent triangles are equal in all respect, that is they are the exact duplicate of each other. Okay, student, understand? If two triangles are congruent, then any one can be superposed on the other to cover it exactly. If you are using superposing method, then if we can say that two triangles are congruent, then if we superposed one triangle to the another, it will be exactly, means it can be superposed on the other to cover it exactly. Okay, in congruent triangle, the side and the angle which coincide by superposition are called corresponding side and corresponding angles. Okay, understand? And corresponding side, the corresponding side lies opposite to the equal angle and the corresponding angle lies to the equal sides. Okay, in the above diagram, अगर हम कोई भी डायग्राम की बात करें congruence of a triangle में, see here, okay, if we talk about congruent of a triangle, then corresponding triangle corresponding parts are equal. And how to denote the corresponding parts, correspondence between two sides and two angles? You can use this sign. Okay, these are correspondence sign. Okay, understand? Now and then we can learn in this chapter criteria for congruence of a triangle. Okay, we can learn in our previous classes what is the criteria for congruence of a triangle. If two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and included angle of the other triangle. Okay, then we can say that two triangles are congruent to each other. Okay, and these axioms is called SAS, side angle side axioms of congruency. Okay, this is called side angle side axioms of congruency. Understand? Okay, so and we can shortly we can say that SAS means side angle side axiom. Okay, understand? So this is called side angle side axioms. And when two triangles are congruent, if side and angle of a triangle are equal to the corresponding side and angle or to the another triangle. Okay, understand? Or you can say that if a triangle cover the other triangle completely, then the two triangles are congruent to each other. Okay, understand? So what is side angle side? Two triangle are congruent if two side and the angle between these two side of a triangle are equal to the two side and two angle, and the angle between these two side of the other triangle, okay, is equal. So we can say that SAS,
side angle side congruency. Okay, understand? So these are we learn in our previous videos. And what about and one more thing, always remember side angle side congruency rule hold, but ASS means angle side side or side side angle rule not hold. Understand? Understand? Okay, now what is our next rule? Angle side angle. Okay, ASA, two triangle are congruent if two angles and the included side of a triangle are equal to two angles and the included side of other triangle. Okay, understand? See, if these two triangles are said to be congruent if these two angle and this side are congruent to each other. Okay, these two triangle and two side and included side is congruent to each other, then we can say that these two triangle are congruent to each other. Okay, understand? But in ASA axiom, always remember in ASA axiom मीन्स एंगल साइड एंगल में आपके अगर एंगल एंगल साइड है और साइड एंगल एंगल है तो वो भी आपके रूल क्या होंगे बेटा? फॉलो होंगे, होल्ड होंगे. अंडरस्टैंड? सो two triangle are congruent if any two pair of angle and one pair of corresponding side are equal. We may call it as the angle angle side congruence rule. Okay, understand? So in this rule we can take angle angle side also. Okay, understand? AAS congruence rule also holds since the sum of three angles of a triangle is 180. If two pair of angle are equal, then third pair is also equal. So two triangle are congruent if any two pair of angles and one pair of corresponding side are equal and is called AAS congruence rule. Understand? So always remember, in angle side angle, AAS means angle angle side rule is also hold. Okay, understand? And in this chapter we also learn some property of a triangle. In this section we learn angle opposite to the equal side of an isosceles triangle are equal. मीन्स अगर वो ट्रायंगल आइसोसेलेस है और उसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो उन साइड से बना हुआ एंगल भी कैसा होगा बेटा? इक्वल होगी. अंडरस्टैंड? और हमारा 7.2 थ्योरम क्या बोलता है? एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल. एंड इसका कन्वर्स means 7.3 is the side opposite to the equal angle of a triangle are equal. Understand? So these two theorem are very important theorem in your book. Okay, so remember these two theorem. And we done 7.2 exercise 7.2. I hope you have completed exercise 7.2 in your notebook. And student, always remember, always acknowledge in the वीडियो के एंड में आपको और नीचे की साइड जा कर के अपना प्रेजेंस लिखना है कि आपने वीडियो देखा है. बिकॉज ये प्रेजेंस आपका कंपलसरी है आज से. अगर आपने कंपलसरीली यहाँ पर वीडियो में प्रेजेंट नहीं लिखा है मीन्स आप अब्सेंट हैं उस दिन. ओके, सो एक्नॉलेज करना कंपलसरी है. यू हैव टू एक्नॉलेज द वीडियो regularly. Okay, now some more criteria for congruence of a triangle. In this section we learn some more criteria. Some more criteria means अभी तक हमने दो criteria देखे, that is SAS side angle side and angle side angle. Okay, now इसके अलावा भी ट्रायंगल्स टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस कब कब हो सकते हैं?
So one more criteria, that is your theorem 7.4, SSS congruence rule. What is SSS? Means if the three sides are of the triangle are equal to the another triangle, then we can say that these two triangles are congruent to each other. If three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. Understand? So we can say that the two triangles are congruent to each other. Okay, student? So this is your third criteria for congruency of a triangle. If two triangles are congruent to each other, the three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent to each other. Okay, so in this criteria, see here, if this side are 5 centimeter, 5 centimeter, 4 and 4, and this is a right angle triangle, so third side is equal, because you know the Pythagoras theorem, 5 square plus 4 square is equal to थर्ड जो भी हम 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो आपका जो परपेंडिकुलर आएगा वो सेम आएगा. सो SSS congruency rule, if three side of one triangle are equal to the three side of another triangle, then the two triangles are congruent to each other. Okay, understand, the right angle triangle is not be included angle in SSS congruency rule. Okay, so in SSS congruency rule, we can say that if three sides are equal to the three sides of another triangle, then we can say that side congruency is whole. Okay, and two triangles are congruent to each other. Okay, student, understand? So note that SSS stand for side. In SAS congruence rule, we know that the pair of equal angle must be the included angle between the pair of corresponding pair, okay, of equal side. And if this is not so, the two triangle may not be congruent. अगर इस टाइप से नहीं है तो तब हम बोलेंगे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है. अंडरस्टैंड? नाउ what about side congruency rule? If three sides are equal to the another three दूसरे ट्रायंगल के थ्री साइड से इक्वल हैं तो हम बोलेंगे साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल इज होल्ड. ओके, अंडरस्टैंड? सो लेट्स सी example. Now next is your RHS congruency rule. What about RHS congruency rule? RHS congruency rule said that two triangles are congruent if the hypotenuse and one side of a triangle are equal to the hypotenuse and one side of the another triangle. Then we can say that the two triangles are congruent to each other. Okay, understand? So in a right angle triangle, right angle hypotenuse side, what is the meaning of RHS, right angle hypotenuse side congruency rule? If two angles triangle, the hypotenuse and the one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangle are congruent. Okay, understand? So which type of questions are coming depending on problem based on SSS and RHS rule. Okay, congruence rule. So first of all, see this example number 7. AB is a line segment, P and Q are point on opposite side of AB. Okay, AB के अपोजिट क्या है? P और Q कोई पॉइंट है, हमने उसे क्या किया है, उन सबको मिला दिया है. These are form quadrilateral. Okay, and PQ is the perpendicular bisector of AB. अब PQ perpendicular bisector है, so this become 90 डिग्री एंगल. यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, सब जगह पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू हैव डू, यू इट्स गिवन PA इज इक्वल टू PB, इट्स गिवन. ओके, इन क्वेश्चन इट्स गिवन PA एंड PB इक्वल हैं. ओके, एंड AQ एंड QA एंड QB भी इक्वल हैं, दिया हुआ है. बट PQ क्या है? परपेंडिकुलर है AB के. PQ क्या है? परपेंडिकुलर है AB के. ओके, सो we have to show that PQ is perpendicular bisector of AB. We have to show that PQ is perpendicular bisector to
AB. Okay, now to prove this theorem we know that what is given, AB is equal to BP, it's given. Okay, AQ is equal to BQ is also given, and PQ is equal to PQ. PQ is equal to PQ is your कॉमन साइड. ओके, हम कौन कौन से दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हम इन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. ओके, दीज टू ट्रायंगल्स. ओके, ए पी ए क्यू और पी बी क्यू. ओके, अंडरस्टैंड. यहाँ पर हमें पता है ए बी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू पी बी एंड ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी. इट्स गिवन. ओके, अंडरस्टैंड. सो हमें ये गिवन है, कॉमन साइड है, तो एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर. इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर देन वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू CPCT ये दो एंगल मीन्स APQ और BPQ भी इक्वल होंगे. अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं मीन्स इफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ओके, बिकॉज अगर ये दो ट्रायंगल इक्वल हैं तो उनके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे. और BPQ APQ इज इक्वल टू BPQ मीन्स अगर ये दोनों ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स अकॉर्डिंग टू CPCT सब ट्रायंगल्स भी कैसे होंगे, उसके एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे. सो वी कैन से दैट APQ इज इक्वल टू एंगल BPQ मीन्स P वाला एंगल इन दोनों का इक्वल होगा और PAQ इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रेंट टू PBQ. ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं तो ये वाला जो एंगल है ये दोनों इक्वल हो गए. ठीक है, नाउ लेट अस PAC एंड PBC. अब हमें दो ट्रायंगल लेना है PAC एंड PBC. अब ये दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे हम, छोटे वाले. ठीक है, AP इज इक्वल टू BP इज गिवन. हमने प्रूव कर दिया कि ये दो ट्रायंगल, ये दो एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं. ओके, सो वी प्रूव एंगल P इज इक्वल टू एंगल P. नाउ वी कैन सी ट्रायंगल APC एंड BPC. ओके, इन these two triangle we know AP is equal to BP is given. AP is equal to BP is given and angle P and angle P is equal because we have proved it. Okay, now if AP is equal to BP is given and angle P is equal to angle P means APC angle APC is equal to angle BPC because we have proved it. Okay, and PC is equal to PC because it's common side, so we can say that side angle side angle side से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, congruent to each other. If these two triangle are congruent to each other then according to CPCT AC is equal to AB. AC is equal to AC is equal to CB. So these two sides are also equal. ओके, CPCT से. सो हमने प्रूफ कर दिया AC और BC भी कैसे हो गए, इक्वल हुए. अंडरस्टैंड. नाउ देयरफॉर एंड एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP. ACP मीन्स ये वाला एंगल, दिस वन, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ओके, अब व्हेन दिस टू एंगल्स आर इक्वल, we can see this is a स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन पर ये दो एंगल इक्वल हैं. अब ये दो एंगल हमें पता है स्ट्रेट लाइन पर जो भी कोई एंगल बनते हैं वो हमारे 180 डिग्री होते हैं, डेट इज़ लीनियर पेयर. और लीनियर पेयर इक्वल कब होंगे, जब वो 90 डिग्री के होंगे. दीज टू एंगल्स आर इक्वल व्हेन दे आर 90 डिग्री. ओके, सो ACP प्लस BCP इज इक्वल टू 180. सो इट्स अ 90 डिग्री. इफ इट इज़ अ 90 डिग्री then it's a perpendicular means PQ is a perpendicular of AB. Understand? So this type you have to prove the questions. Okay, and question number 8 example number 8 is also you can see it, and if you have any doubt tell me on WhatsApp. Okay, now exercise 7.3. see exercise number 7.3 question number first. In triangle ABC and DBC there are two triangles are given, ABC and DBC. Okay, and
you have to prove on the same base BC. BC is the same base. Okay, and vertices A and D are on the same side on BC. वर्टाइसेस हैं हमारे पास में ए और डी, मीन्स आप दो ट्रायंगल देख रहे हैं बी डी सी और ए बी सी. ओके, दीज आर टू ट्रायंगल्स. सो इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी, ए डी को हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए डी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, बिकॉज इफ वी वांट टू intersect BC. Okay, so we can prove that triangle ABD is congruent to triangle ACD. We have to prove that triangle ABD is congruent to triangle. So student, to show triangle ABD is congruent to triangle ACD, first of all we see these two triangle AB is equal to AC. AB is equal to AC because it's a given. Okay, understand, because it's isosceles triangle. In isosceles triangle two sides are equal measure, so AB is equal to AC is given, BD is equal to DC is also given. Okay, because these two are isosceles triangle. Now AD is equal to AD because it's a common side. Okay, so side congruency rule say these two triangle, which these two triangle ABD and ACD are congruent to each other. ABD and ACD are congruent to each other. If these two triangle are congruent, so we can say that these two triangle are congruent to each other. Now let's take second one, triangle ABP and triangle ACP. ABP and ACP. Now see here, AB is equal to AC is given, AP is equal to AP because it's a common side, and angle BAP is equal to angle CAP. Why? Angle BAP is equal to angle CAP. Now we have to prove our third part of this question, that is AP bisect angle A as well as AD as well as angle D. Okay, so if we want to prove this one, then we can prove that we know that angle ABD, triangle ABD is congruent to triangle ACD. Okay, and angle BAD is equal to angle CAD because by CPCT we know that by CPCT two triangles are congruent to each other. Okay, so if two triangles are congruent to each other, so their corresponding part is always equal. Okay, so we know that angle A is equal to angle A. Okay, now triangle ABP is congruent to triangle ACP. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं और ये एंगल भी इक्वल है ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, हमने क्या किया, दो इक्वेशन बना ली. हमारे पास में दो इक्वेशन कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज एंगल ABD जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD. ओके, इट्स अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. व्हाट इज अवर इक्वेशन नंबर 2? एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD according to CPCT. ओके, CPCT से ये दोनों इक्वल हो गए. एंड वी नो दैट ट्रायंगल ABD BA हमारे पास में दो इक्वेशन है बेटा. फर्स्ट इक्वेशन दिस वन, सेकेंड हमने ये वाला प्रूफ किया. ओके, दिस टू इक्वेशन वी नो दैट. ओके, फर्स्ट में से सेकेंड को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ABP माइनस ABD इज इक्वल टू ACP माइनस
ACP माइनस ACD। ओके, अगर हमने माइनस किया है तो हमारे पास में यहाँ पर क्या बचेगा, सी हियर। अगर ये दोनों माइनस करते हैं तो हमारे पास में बचेगा, अगर हम इसको ABP में से हियर इफ़ यू वांट टू सी ABD, अगर मैं ये वाले ट्रायंगल की बात करती हूँ, दिस वन ABD में से मैं माइनस कर रही हूँ ABP। दूसरा कलर ले लिया जाए, मैं ये वाला माइनस कर रही हूँ। ओके, अंडरस्टैंड। एंड दूसरे वाले में अब ये माइनस कर दिया तो ये वाला बचेगा मेरे पास में, दिस वन। ओके, एंड अगर मैं ये वाले में से वैसे ही इस वाले ट्रायंगल में से मैं इसको माइनस कर दूंगी पूरे वाले को, तो मेरे पास बचेगा कौन सा भाग, ये वाला भाग बचेगा। तो मेरे पास बचा DBP इज इक्वल टू DCP। सो वी नो दैट BDP, हम उसको अरेंज करके लिख सकते हैं, BDP इज इक्वल टू CDP, दो एंगल्स इक्वल होंगे। ओके, सो हैंस AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। ओके, अंडरस्टैंड। So this way you have proved all the what is your fourth part. Fourth part is said you AP is the perpendicular bisector of DC. AP is perpendicular bisector of BP. So let's prove these questions. Okay, and do it question number 2, 3 and 4 also. There are only 5 questions. If you have any doubt, tell me on WhatsApp. Okay, have a good